Hello and welcome to MahindraGuru.com's official YouTube channel, and we are here in the new session where we are going to discuss important facts about interview with our interview expert. जी हाँ, नजर डालेंगे हम इंटरव्यू के कुछ खास पॉइंट्स पे, कुछ खास मुद्दों पे बात करेंगे और आपके क्वेश्चंस, क्वेरीज सबके आंसर्स आज आपको यहाँ इस सेशन में मिलेंगे। स्वागत करेंगे हमारे इंटरव्यू एक्सपर्ट का भी और आप सभी कैंडिडेट्स का, जितने भी व्यूवर्स, एस्पायरेंट स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। जल्दी से तैयार हो जाइए अपने क्वेश्चंस, क्वेरीज के साथ, क्योंकि आज का सेशन होने वाला है इंटरेस्टिंग। द पॉइंट्स व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस सेशन विल गोइंग टू डेफिनेटली हेल्प यू आउट इन द कमिंग इंटरव्यू। तो अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए जल्दी से अपने क्वेश्चंस, डाउट्स तैयार करके यहाँ पे पोस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि आपको उसके आंसर्स मिल सके। स्टार्ट करेंगे सेशन, बट यस उससे पहले बिल्कुल जानेंगे इंटरव्यू एक्सपर्ट से कि सर इस तरीके के जो सेशंस हम यहाँ कंडक्ट कराते हैं हमारे महिंद्रा गुरु के चैनल पे, हाउ कैन दीज सेशंस बी वेरी हेल्पफुल टू द कैंडिडेट्स, और किस तरीके से वो इंटरव्यू बोर्ड के सामने कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं। फ्रेंड्स, देर आर मेनी क्वेश्चंस दैट कम अप इन आवर माइंड। आपके दिमाग में तमाम प्रश्न आ रहे हैं कि इंटरव्यू क्या होगा, कैसा होगा, कौन बोलेगा, क्या बोलेगा, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सब बातें जब दिमाग में आती है तो ये सब हमको एक तरह का नर्वसनेस कॉज करती है। तो उसी बात को आपका थोड़ा सा समाधान देने के लिए, टू हेल्प यू आउट with all those thoughts, we are conducting this session so that you become more confident, more prepared, and you go there with a positive frame of mind and in with all happiness, and treat the interview just like a festival. You celebrate it, don't just go to observe it, and be happy. And we will try in these sessions to help you out from your questions, from your thoughts, from your confusions that you are having in your mind as far as possible. डेफिनेटली विल टेक अप द कमेंट ऑफ पवन सिंह ओवर हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल पवन सिंह जी का कमेंट हम यहाँ पे लेंगे। सर उनने जब प्रेफरेंस फिल आउट किया था एप्लीकेशन फॉर्म में, सो ही हैव मेंशन्ड आईडीबीआई एज द फर्स्ट प्रेफरेंस। अब क्वेश्चन उनका ये आया है कि अगर इंटरव्यू बोर्ड उनसे पूछता है कि व्हाई आईडीबीआई, तो उसका वो क्या एक्यूरेट या करेक्ट आंसर दें, अप्रोप्रिएट आंसर दें। Since he has filled out IDBI, in fact, Pawan Singh or any other person for that, whatever the preference you are given as the first preference or second preference or third preference, up to third preference in the banks, try to go to the site of these banks and find out what are the positives of this bank, what are the financials, what are the total branches, ATM, what is the total deposits, what type of achievements these banks have made. They get various awards, various recognitions. You find out what are the recognitions. You find out about the mission and vision of these banks and try to relate them to what you see your standing in the bank, how you will try to fulfill those missions and visions of the bank, and how you will try to build up your career with the bank. नाउ इफ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट, तो एक और आईडीबीआई का ही एक इशू यहाँ पे आया है। अतुल कुमार इज सेइंग कि ही हैव रिजाइन फ्रॉम आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव पोस्ट एज इट वाज कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब एंड सैलरी वाज टू लेस। सो शुड ही मेंशन दिस इन आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू? Why not? Because it was a contractual job. It was a contractual job, and tell that he can say that why did he resign? I think that he resigned so that he could prepare for this IBPS competitions. So let him tell that I resigned to prepare for IBPS competitions, and now I got some experience in the working of the bank, and I hope that now this experience will help me to be a better officer and better to give better customer service in the bank where I am posted after my selection. डेफिनेटली। नाउ वील टेक द कमेंट ऑफ राजीव द्विवेदी जी। राजीव द्विवेदी पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ अ पीओ, प्रोविजनरी ऑफिसर की वर्किंग क्या होती है? See, a probationary officer is a second line officer in a bank. He is a trainee, sort of a trainee officer. So you'll have to carry out whatever the instructions the superior officer is giving him regarding the day-to-day working of the branch. At the same time, he is also a learner, so he should try to look at the various circulars the banks are issuing, the various guidelines, and try to learn his job, and and on in his on hand training also will come a good state,
and he should try to cultivate himself to be a good bank officer within the probationary time. Definitely. Next comment if we take about is of Akshay Das. Akshay Das जी पूछ रहे हैं कि what is good for economy, inflation or deflation? See, inflation for a developing economy, it is always the inflation that is important. A mild inflation is necessary, and that is why the Reserve Bank of India has also said that a mild inflation should be there, because without inflation, there will be no growth, and for a developing economy to grow, there has to be inflation. अब पवन सिंह जी को डेफिनेटली हम ही रिप्लाई यहाँ पे दे देते हैं कि नो मैटर ही हैव नॉट मेंशन्ड हिज वर्किंग एक्सपीरियंस इन द एप्लीकेशन फॉर्म, माइट बी ही वाज वर्किंग समवेयर इन द प्राइवेट फर्म, तो प्राइवेट फर्म्स डेफिनेटली दे डोंट प्रोवाइड एनी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो अगर इंटरव्यू के टाइम पे दे आस्क कि आपका पर्टिकुलर 4 साल का या 5 साल का टेन्योर कहाँ पे था, सो सर वो शेयर कर सकते हैं वहाँ पे। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो श्रद्धा तांडवी जी, अगेन द अपीयरेंस क्वेश्चन इज हियर कि इंटरव्यू में बिल्कुल सिंपल जाना चाहिए या फिर लिटिल एंड सोबर मेकअप इज। See, it is a formal interview is a formal occasion. So you should not wear clothes that you wear for a party or a shadi and all those things for a marriage, but you should wear formal clothes, that good clothes, and some sober makeup also. You are feminine, you should look feminine. Why don't you want to wear makeup? Wear mild lipstick, a mild nail polish, and all those things. And you should go good looking. Why not? Why do you want to depress yourself? You should go डेफिनेटली। happy. You should be in a happy frame of mind. So the the main thing is that your face should glow with happiness, with energy, with confidence. That is the main thing. बिल्कुल। तो अपीयरेंस इज समवट इट हैज टू बी अ फॉर्मल लुक अपीयरेंस, सो यू कैन गो फॉर अ सोबर मेकअप, बट ये भी तभी होता है जब वो उनको कंफर्टेबल फील कराए या वो उस चीज के लेके यूज टू हो। और अंदर से भी आपका, इट इज नॉट द एक्सटर्नल मेकअप दैट मैटर्स, इट इज द इंटरनल मेकअप ऑल्सो, द इंटरनल कॉन्फिडेंस, द इंटरनल हैप्पीनेस, द इंटरनल स्माइलिंग एंड ग्लोइंग फेस, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। डेफिनेटली। नाउ इफ वी टॉक अबाउट प्रभजोत सिंह जी, प्रभजोत सिंह जी का पूछना है Yeah, यहाँ he पे, is being joining us, I think, जॉइनिंग every बिल्कुल time. रेगुलरली, ही इज हाँ, जॉइनिंग अस good. रेगुलरली। तो प्रभजोत सिंह जी का पूछना यहाँ पे है कि डू पैनल आस्क फॉर आवर रिज्यूम और सीवी? They don't ask for any of those things. They have told you that you should bring a printout of the application form that you filled in for the IBPS interview. That is what you have to take. That will serve as a resume and the biodata and everything. बिल्कुल। विवेक सागर जी ने यहाँ पे कमेंट किया है, बट विवेक सागर जी से हम यहाँ कहना चाहेंगे कि अपनी बाकी की डिटेल्स भी आप यहाँ शेयर कर दीजिए, सो दैट वी कैन टेल यू मोर इफेक्टिवली कि आपका स्टेप क्या होना चाहिए। एक्चुअली उनका पूछना यहाँ पे ये था कि ही हैड अ गैप ऑफ 2 years बिटवीन ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स, तो वो इस गैप को कैसे रिस्पॉन्ड करें? नहीं, वो क्या कर रहे थे? Let him be frank at what he was doing. And whatever he was doing at that time, suppose after graduation he was looking for a job, or he was sitting for some CAT examination and wanted to do MBA and he was not successful. Whatever it is, let him narrate it to the board. Definitely. So Vivek Sagar ji, you can definitely share your thoughts, share Because even preparing, if you are preparing for CAT and those exams, you are constructively using yourself, and studying for CAT or examination also has added something to your knowledge. डेफिनेटली। नाउ नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट कि काव्या रस्तोगी जी का पूछना यहाँ पे है कि व्हाट कुड बी अ गुड आंसर टू व्हाई बैंक आफ्टर कंप्यूटर इंजीनियरिंग? Yeah. Why bank after computing engineering? What happened? What really happened with you? When you did computer engineering, when you joined computer engineering, you never thought, and this is true for all the engineers. डेफिनेटली दिस इज ट्रू। You never thought that you will be coming to the bank. But unfortunately, because of various circumstances and various things that have happened and the circumstances, you could not get a proper placement. You did get a placement, but it was not a proper placement. And since you did not get a proper placement, you had to look for alternate job opportunities, career opportunities, and you found that banks were offering a lot of jobs. One. And the selection in the banks are fair and quick. Second. And third, many of your friends and peers who had joined the bank were talking high about the bank career growth and salary and all.
and working conditions and all those things. All these things have attracted you to the banking service. Particularly, and moreover, you are a computer person, and banks are all now technologically enabled, where we are using computers, and you being a computer person will be able to better use those computers, and your using them better means a better customer service, a better customer delight to the customer, and that is what you are, will be there for. डेफिनेटली. समीर खजूरकर का क्वेश्चन अब हम यहाँ पे लेंगे. समीर खजूरकर इज आस्किंग कि व्हाट कुड बी अ गुड आंसर फॉर व्हाई यू चूज पब्लिक सेक्टर देन द प्राइवेट. But you choose the public sector than the private, because the opportunity, more opportunities came from the public sector. The number of jobs offered by the public sector banks are much more than by the private banks, and the private banks, they are individual vacancies and very few vacancies. And so from the science of probability, I thought that I'll go for the public sector banks. अब अरुण राज जी यहाँ पे थोड़े से कंफ्यूज हैं अपने ग्रेजुएशन स्किल्स को लेके. ही इज आस्किंग कि ही इज अ ग्रेजुएट इन मैथमेटिक्स. Okay. व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन आई एक्सपेक्ट फ्रॉम द मैथ्स? ही इज रियली कंफ्यूज्ड See, अबाउट all दिस. basic questions about the mass. They can ask you anything, how to measure the height of a building, or even a small question like how many centimeters there are in an inch. It can be as simple as that. मतलब द क्वेश्चंस व्हिच कैन नॉट बी इमेजिन्ड वो पूछे जा It सकते is हैं. on your, you see, whatever they ask, you know that. Only thing, you have to be very sharp and very quick in thinking, and listen to the question carefully. Don't hear the question. Many times, I always counsel you people that you should listen to the question. Listening to the question means hearing the question carefully, rotating the question in your brain for about 10 seconds, then making up the answer and then bringing out the answer. Just don't answer after hearing half the question. Listen to the question carefully and then make up your answer in your brain, and then answer carefully using words that you meaning of which you know. Don't use words the meaning of which you do not know. डेफिनेटली. नाउ नवीश गुप्ता जी इज आस्किंग समथिंग. व्हाई शुड वी हायर यू? इसका आंसर क्या वो ये बोल सकते हैं कि वो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं और वहां पे प्रॉब्लम फेस करते हैं लोग रिगार्डिंग बैंकिंग, सो मेन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में वो हेल्प कर सकते हैं. देखिए, ये सब आप कितना आप रूरल एरिया में रहे हैं, कितना वहाँ काम किए हैं, फिर रूरल एरिया के बारे में काफ़ी कुछ आपसे पूछा जाएगा. वाई आर यू ज्वाइनिंग द बैंक? यू रिलेट समथिंग टू योर स्किल्स फ्रॉम योर स्ट्रेंथ्स, and what you have studied in the college, your certain interpersonal skills that you have studied, and that you are going to use there. I don't think as a professional officer you are going to do much than what you are going to be asked to do by the bank. You are not going to be a social officer, social welfare officer there. It is not a NGO, commercial bank, and you will be will have to join the bank. Contact the customers carefully, contact the customers regularly, so that they are aware that they should repay the loan and bring back the repayments. डेफिनेटली. आगे अब अगर क्वेश्चन की बात करें तो बिल्कुल मनमत जैन इज आस्किंग कि व्हाट इज गुड, फिस्कल डेफिसिट और बजट डेफिसिट? बजट. See, deficit, why does it happen? Because your expenditure is more than your income. And in a developing economy, a deficit always occurs. Now the question of physical deficit or budget deficit. Now, what is this? I think not to some extent. To otherwise, the if the economy is self-sufficient, then it means that if we are going to expend only what we get, what is the income that we are getting, then maybe we will not be able to give much to the development of the economy. नाउ मानसी मेहता जी इज अ कॉमर्स स्टूडेंट एंड डेफिनेटली बेसिक क्वेश्चंस तो आपको पढ़ के जाने ही हैं. अब उनका पूछना ये है कि इंटरव्यू में उनकी अकाउंटेंसी स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते बिल्कुल हैं पूछ क्या? सकते हैं. अगर आपको अकाउंटेंसी स्टडी से क्यों नहीं पूछेंगे भाई? सब बेसिक क्वेश्चंस तो आपसे एक्सपेक्टेड है ही है. और कुछ अगर आपने कॉमर्स का पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है या कोई बीकॉम के ऊपर के डिग्री भी किया है, तो कुछ रेशियोज के बारे में आपसे भी पूछा जा सकता है.
कोई एक आपको बैलेंस शीट दे के उसमें भी वो पूछ सकते हैं कि ये रेशियो कहाँ से निकालोगे, कैसा निकालोगे, एक्सेट्रा. Some basic ratios. Basic ratios. Now, Rajiv Dwivedi ji is asking once again a question कि he is a BSc in IT graduate. Why you came in banking sector and why should not you apply for SO? अगर ऐसा कुछ पूछा जाता है. हाँ, एसओ में क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हैं, क्यों पीओ में अप्लाई कर रहे हैं, तो अगेन यही कहिए कि सर हमें बैंकिंग को अपना करियर बनाना चाहता हूँ. इफ आई अप्लाई फॉर एसओ आई विल बी कन्फाइंड टू ओनली द स्पेशलिस्ट ऑफिसर jobs. And since I want to become a banker, I am coming as a probationary officer so that I can learn the basic rudiments of banking, the basic banking, and learn banking to become a banker. At the same time, even as a banker, I will be using my technical skills so that I can give good customer service. डेफिनेटली. प्रणव सोनवल जी का कमेंट लेंगे यहाँ पे. सोनोवल जी का, ही वाज वर्किंग एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव इन आईडीबीआई. सो व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल अराइज इन इंटरव्यू इफ ही मेंशन्ड अबाउट इट? Sales executive means he has been marketing the products of the bank. बिल्कुल. So they can talk about how you are marketing. Suppose they And take what up products you are marketing. what products, or they can take up an insurance product and ask him how he'll market it. And so certain such questions That of means the marketing products he can, which he was working yeah, upon उसके बारे में नॉलेज रखनी जरूरी है. मार्केटिंग कैसा कर रहा था, मार्केटिंग के लिए क्या करना चाहिए, सच तरीके से. अब इसके बाद बिल्कुल राजीव द्विवेदी जी, आपके क्वेश्चन का आंसर हमने दे दिया है आपको. अब इसके बाद अगर हम बात करें कि नवीन राज जी बेसिक सा एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, चलिए उनको रिप्लाई कर देते हैं. पूछ वो ये रहे हैं कि उनका आईडीबीआई पीओ का पेपर है 3 फरवरी को 8 बजे सुबह, और उसी दिन इंटरव्यू है 1 बजे नोएडा में सेक्टर 62 में. तो क्या वो पेपर देने जा सकते हैं? ये तो भाई उनको मैनेज करना मैनेज पड़ेगा. करना पड़ेगा, मैनेज द इफ इट टाइम. इज मगर मैनेजेबल कोई चीज, neither the test can be postponed nor the एंड नॉट द interview. इंटरव्यू. डेफिनेटली. तो कुछ भी पोस्टपोन नहीं हो सकता, वो आपको यहाँ ध्यान रखना है. इसके बाद अगर हम बात करें, इफ यू कैन मैनेज बोथ द थिंग्स यू Good, कैन and मैनेज. you should try to manage it. क्योंकि वहां पे दोनों बातें आपकी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है. आईडीबीआई पीओ का एग्जाम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, इंटरव्यू तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही. सो इफ यू कैन मैनेज द टाइम यू कैन गो फॉर द एग्जामिनेशन ऑल्सो एंड यू कैन अटेंड द इंटरव्यू ऑल्सो. बट ये नहीं होना चाहिए कि किसी एक वजह से किसी एक को छोड़ रहे हैं आप और बाद में आप रिग्रेट आउट करें उसके लिए. तो वो थोड़ा सा आपको वहां पे ध्यान रखना है. नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट द क्वेश्चन, अगर हम यहाँ पे लें तो बिल्कुल वो शिल्पा आर जी आपको हमने एनपीए कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, सर ने उसको एक्सप्लेन कर दिया कि यू आर जस्ट ज्वाइनिंग द बैंक. तो आप वहाँ पे उसको बता सकते हैं कि अगर एनपीए डिपार्टमेंट में आपको प्लेस आउट किया जाता है, सो डेफिनेटली द ट्रेनिंग एंड ऑल एवरीथिंग जो भी बताया जाता है वो सारी स्टेप्स आप फॉलो करेंगे टू रिड्यूस द एनपीए. क्योंकि डे 1 ही आप कैसे वहाँ पे बता पाएंगे विदाउट द ट्रेनिंग पार्ट. एंड नीज जब तक हम किसी को फॉलो अप नहीं करेंगे, किसी से नहीं मुलाकात करेंगे या किसी को फोन नहीं करेंगे या लेटर नहीं भेजेंगे, तब तक वो अवेयर नहीं होता है कि Aware नहीं उसको होंगे. सो मोर अवेयरनेस हमें उसमें पैदा करना पड़ेगा टू रिड्यूस इट. बिल्कुल. नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे तो वी हैव बिल्कुल मनमत जैन जी, आपका क्वेश्चन का आंसर भी आपको दे दिया गया है. गुड फिस्कल डेफिसिट बजट और डेफिसिट बजट के बारे में सर ने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस आउट किया है. आगे अगर हम एक बात कहें यहाँ पे तो कैंडिडेट्स को याद दिलाना चाहेंगे कि आप वीडियो लिंक को शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सो दैट मैक्सिमम कैंडिडेट्स कैन ज्वाइन दिस सेशन और वो वहां पे हमारे साथ जुड़ के फिर बिल्कुल यहाँ पे अपने क्वेश्चंस शेयर कर सके, क्वेश्चंस पूछ सके. तो जल्दी से लिंक को शेयर भी कर दीजिए. एंड यस, इफ यू आर लाइकिंग दिस इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट इंटरव्यू, ऑल द इंटरव्यू की बात सेशंस, तो यू कैन लाइक द वीडियो ऑल्सो. आगे के अगर सर क्वेश्चंस की बात करें तो वी हैव क्वेश्चन डेफिनेटली ऑफ सफवान अहमद. इज देयर एनी advantage in the bank PO job to the person with technical background like BTech? See, it is not exactly what you studied in BTech. There are certain other qualities that you got when you were doing BTech. Those qualities will also come handy, like your interpersonal skills, your organizing capacity, your concentrating ability, and all those things will come handy. डेफिनेटली. नेक्स्ट अगर हम आगे क्वेश्चन की बात करें तो उनका पूछना ये है अरिंदम रॉय जी का, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईसीजीसी एंड एग्जिम? See, this is a What questions we can expect about basal norms? Basal norms. Since if you are MBA in finance, I don't know what is.
If it's MBA in finance or something, they may ask him something. But even if they ask what are Basel norms, then the basic answer should be that it is for having more stability, more liquidity for the banks. Simple as that. He should answer like a layman and not like a banker. Definitely, He is because not supposed to have a full knowledge and a detailed knowledge about all these things. Because he's just preparing for bank exams and preparing to become a banker. He's not neither a banker or if he is MCOM or MBA finance and all those things, then he should try to get a detailed knowledge. now And this this is is also in a digital. दिस इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द इंटरव्यू बोर्ड की अगर हम बात करें पवन सिंह जी का जो क्वेश्चन आया है उसका इंटरव्यू से कोई लेना देना नहीं है बट फिर भी वो पूछ रहे हैं कि डू वी गेट चीप लोन्स एज बैंक एम्प्लॉय एंड अदर पर्क्स फॉर एम्प्लॉयज आर अवेलेबल और नॉट. It depends, the service condition depends from bank to bank. It varies from bank to bank. And the bank that you join will definitely give you some advantage for the employees. बिल्कुल. तो यहाँ पे अब अगर आगे की बात करें तो अरिंदम रॉय जी का भी एक बेसिक सा पूछना ये है कि इंटरव्यू डेट्स में के मार्क्स जो होते हैं वो ऊपर डिपेंड इंटरव्यू डेट्स मेंस के जो मार्क्स होते हैं उस पर डिपेंडेंट होते हैं मतलब जिसका जितना कम मार्क उसका इंटरव्यू लास्ट में होता है. नहीं क्या नहीं कुछ ऐसा कुछ ऐसा नहीं, है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. एंड आई डोंट थिंक दैट योर बोर्ड knows about your marks also. तो They are not ये aware of what marks you have got in the written test. अब अनुराग द्विवेदी जी का एक थोड़ा जेन्युइन प्रॉब्लम है कि पिछली बार भी उनका इंटरव्यू दिया था उनने पीओ का प्रोबेशनरी ऑफिसर का बट उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ. इस बार वो एक्स्ट्रा क्या करे? उन्होंने क्या एनालाइज किया अपना, उनका मार्क्स में क्या, मार्क्स में इंटरव्यू में कमी थी कि रिटन टेस्ट में कमी थी? वेयर वाज हिज डेफिशिएंसी? एंड मेन थिंग इज दैट एज आई हैव टोल्ड यू फॉर द इंटरव्यू स्पेशली, हैव ए पॉजिटिव एटीट्यूड, be happy from inside, have full confidence, go there with a glowing face, with a happy face, and be confident, be with full confidence. That is more important. बिल्कुल. If it is the interview. But अब I think that you should analyze your overall performance. Maybe your written test marks were low and you could not make for the final cutoff. अब यहाँ पे अनिल सावंत जी का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है. यहाँ पे उन्होंने जो शेयर आउट किया है कि देयर इज अ 8 year गैप बिटवीन उनके 12th और ग्रेजुएशन ड्यू टू फाइनेंशियल मैटर्स बट नाउ दिस ईयर ही हैव कंप्लीटेड हिज बीकॉम एंड अपीयर्ड इन एसएससी एग्जाम आल्सो. सो अब अगर वो आगे बैंकिंग के लिए फॉर्म्स फिल करते हैं तो क्या इसका कुछ इम्पैक्ट होगा? इम्पैक्ट तो नहीं होगा, मगर 8 साल क्या हुआ इसके बारे में आपको ये बताना पड़ेगा. ये नहीं कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, ठीक है प्रॉब्लम था, मगर 8 साल तक आप क्या किए? अगर फैमिली में फाइनेंशियल प्रॉब्लम था तो आपने कुछ ना कुछ तो किया होगा टू हेल्प द फैमिली आउट. यू मस्ट हैव डन सम वर्क, यू मस्ट हैव टेकन सम ट्यूशंस और व्हाटएवर इट इज, दोस थिंग्स यू विल हैव टू एक्सप्लेन आउट टू द बोर्ड. बिल्कुल. अब यहाँ पे त्रिशा पॉल जी पूछ रहे हैं कि व्हाई इज द बैंक रेट एंड एमएसएफ ऑलवेज इक्वल? बैंक रेट और एमएसएफ हमेशा बराबर क्यों होता है? अरे भाई, that is a short term, both are short term, actually what happens, a bank rate is for the bank it is a long term rate, but for the government it is a short term rate. जो government short term loans लेती है, that is charged under bank rate. And again the MSF is also overnight rate for the banks, it's also short term, so they are also almost they are kept at the same level so that there is no variation. वेरिएशंस ना हो वहां पे. बिल्कुल. तो ये आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है. And it is an economic step, it is economic policy. Maybe someday the Reserve Bank may think that it is not necessary to make keep both equal, and they may vary. There is no rule that both have to be the same. बिल्कुल. आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल देविका ठाकुर जी का पूछना वही है कि शी इज अ बीए स्टूडेंट. आई वॉन्ट टू सी माई सेल्फ एज पीओ इन एसबीआई. तो अब अभी तो अपेयर करेंगे वो पीएसबी प्रोविजनरी ऑफिसर के लिए बट उनका मेन टारगेट इज एसबीआई. तो किस तरीके से अब वो इस सिचुएशन को हैंडल करें? तो जब आप एसबीआई में अपेयर करेंगे, जब मिलेगी तब वो बात होगी एसबीआई के बारे में. Then at that time when we in this session you can ask this question. Now you join the public sector bank, you clear this interview, join the public sector bank, work there,
and when the SBI advertisement come, you appear for the SBI, and when you clear that, and when you are eligible for the interview, at that time we'll be having these sessions. At that time, I think it is the proper occasion to answer the question. बिल्कुल। काव्या रस्तोगी जी का यहाँ पे पूछना है कि काव्या रस्तोगी इज अ कंप्यूटर इंजीनियर 2016 पास आउट बट विथ नो एक्सपीरियंस। नाउ ही इज प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चंस बट इफ he is not able to answer any such questions, so what should be the satisfactory response? See, it is not necessary that every person knows everything about banking. You are not supposed to know many things about banking. They may not talk to you many things about banking, but they may talk to you many things about computers. If you are a computer, you know what are the applications of computers in banking. You should know about the working of CBS and mobile banking or various virtual banking platforms. All that you know. You prepare yourself for all those things. And what you don't know, you just say, sir, sorry, sir, I do not know anything about it. बिल्कुल। अब अगर आगे बात करें तो शिल्पा आर जी का पूछना है हाउ कैन वी एक्सप्लेन कार और CRR इन शॉर्ट एंड इफेक्टिव वे इन एन अंडरस्टेबल लैंग्वेज। तो इसके लिए तो सर हम ही इनको यहाँ पे बता देते हैं। कार और CRR के बारे में जब भी आप बताना चाहेंगे, यू जस्ट हैव टू नो फर्स्ट ऑफ ऑल द फैक्ट्स कि व्हाट इज कार, व्हाट इज CRR, क्यों उसको बैंक अपने पास रखा जाता है, RBI के किस एक्ट के। कार अलग चीज है, CRR अलग अलग है। चीज है और उनको कैसे, क्यों दोनों क्यों कंफ्यूज कर रही है? यहाँ पे उनको ये पूछना है कि कैसे वो अंडरस्टेबल लैंग्वेज में उसको समझा सकती है। CRR को कि SCAR को? CAR एंड CRR बोथ। अच्छा, बोथ शी इज आस्किंग, ओके। तो बोथ वही चीज है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसको बिल्कुल क्लियर रखना जरूरी है कि व्हाट इज CR, कार क्या होता है, CRR क्या होता है, एंड इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट आप उसको क्लियरली समझा सकते हैं। एंड इफ यू आर गिविंग द स्टैटिस्टिक्स, अगर आप पॉइंट टू पॉइंट उसकी डिटेलिंग डेटा के साथ बता रहे हैं तो इट इज वेरी मच अंडरस्टूड, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक बैंकर को ही सामने उसको आप प्रेजेंट आउट करेंगे। तो डू नॉट वरी अबाउट दैट कि कैसे उसकी अंडरस्टेबल लैंग्वेज होनी चाहिए। लैंग्वेज में वेरिएशंस कहीं पे भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो जैसा फैक्ट है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें तो बिल्कुल अरुण राज जी का यहाँ पे पूछना है कि ग्रेजुएट किया है, ग्रेजुएशन हुआ है उनका लास्ट ईयर इन मैथमेटिक्स, करंटली ही इज डूइंग लॉ फ्रॉम DU। should I tell them about it or not tell to avoid questions from law background? If you don't want to explain that, once you are not completed law still, you can avoid that. No problem. अब इसके बाद बिल्कुल अगर आगे क्वेश्चंस तो कहीं ना कहीं नहीं, अगर लॉ बताएंगे तो कि जितना भी लॉ किए हैं, जितना भी साल लॉ किए हैं, क्या क्या पढ़े हो, क्या पढ़े हो, दे विल आस्क यू व्हाट यू आर स्टडीड इन लॉ. So as a probationary engineer officer, there is actually no use of civil engineering as such in the bank. But while doing civil engineering, you must develop so many interpersonal skills and other types of skills which you can relate to the bank's job and say that these skills were obtained by me while I was doing civil engineering, and these will come useful for the banks. अब यहाँ पे पंकज यादव जी पूछ रहे हैं कि हाउ टू इम्प्रूव द बैंकिंग अवेयरनेस पार्ट और GDPI वो कैसे क्रैक करे, तो बुक सजेशन मांग रहे हैं। तो एक ही बात हम आपसे कहेंगे, विजिट द वेबसाइट mahindraguru.com और वहाँ पे इंटरव्यू क्रैकर इज अवेलेबल। इंटरव्यू क्रैकर में आपकी बैंकिंग अवेयरनेस के फैक्ट्स, PD के सारे फैक्ट्स वो क्लियर आउट हो जाएंगे। इसके अलावा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का बूस्टर भी अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे, सो यू कैन गो थ्रू दैट। डेली हेडलाइंस को देखें, बिल्कुल डेली करंट अफेयर्स देखते रहें, क्योंकि यही आपके मोड्स हैं। डिजिटलाइज वे में कीप ऑन स्टडिंग, दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट, क्योंकि इससे फायदा एक ही होगा कि अगर आप कहीं रास्ते में हैं या कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं तो भी आप ये आराम से ये सारी चीजें एक्सेस कर सकते हैं रादर देन कैरिंग एनी बुक। तो बिल्कुल इंटरव्यू बूस्टर, बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस जो वेबसाइट्स पे बूस्टर्स अवेलेबल हैं, आप उनको गो थ्रू करें। mahindraguru.com इज द वेबसाइट, डू नॉट फॉरगेट। वहां पे जाके आप जब डिजी पेजेस भी देख लेंगे तो डिजी पेजेस डेली बेसिस पे आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी टॉपिक के बारे में क्लियर करता रहेगा। इसके अलावा यू कैन वॉच द करंट अफेयर्स सेशन दैट इज #BCA ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ महिंद्रा गुरु इटसेल्फ। तो ये सारी चीजें आप प्रिपेयर करते चलें, आपको एक्स्ट्रा किसी बुक की पब्लिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। आगे अगर आप क्वेश्चंस की बात करें तो देविका ठाकुर जी का फिर से यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि शी इज अ BA स्टूडेंट एंड टुक पॉलिटिकल साइंस इन द मेन सब्जेक्ट। तो अब अगर वो पूछते हैं तो बेसिक क्वेश्चंस पॉलिटिकल साइंस के बारे में वो पूछ सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस के बारे में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछ सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस के बारे में पूछ सकते हैं, आर्टिकल्स के बारे में कितने आर्टिकल्स हैं ये सब पूछ सकते हैं, बेसिक
preamble के बारे में कुछ पूछ सकते हैं. Then they can ask about the constitutional authorities, उनके इलेक्शन, उनके अपॉइंटमेंट के बारे में कुछ पूछ सकते हैं. Such questions they can ask. अब आशु त्रिपाठी जी का यहाँ पे कहना है कि यू डोंट हैव एनी स्पेसिफिक हॉबी, सो व्हाट एंड हाउ कैन आई टैकल दिस क्वेश्चन. If you don't have a hobby, it doesn't matter. Tell them that you don't have a specific hobby, but you must be definitely having interest. सम इंटरेस्ट. आप अपना खाली समय में कुछ ना कुछ तो करते होंगे. वही एक दो चीज बता दीजिए. पर यहाँ सर एक क्वेश्चन अच्छा हमारे मन में आता है, कैंडिडेट्स की प्रिपरेशंस भी देखते हैं हम लोग भी, हमारा स्केड्यूलिंग लाइफस्टाइल जो देखते हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि किसी के पास दिन में टाइम बचता है फॉर इंटरेस्ट इन हॉबीज. नहीं, सबको बचता है. एवरी पर्सन अनलेस एंड अनटिल ही हैज गॉट ये इमरजेंसी इन हिज लाइफ, ही हैज गॉट फ्री टाइम. देखिए, हमारा हॉबी नहीं होगा. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ हॉबी एंड इंटरेस्ट? Hobby is something that I do every day in my free time. Plus, I am so much into it, that I also have got some academic knowledge about it. You know, but interest is something that we do. आज हम कुछ कर रहे हैं. Today I got some free time. I am watching TV. Tomorrow I got some free time. I am doing some cooking. Third day I got some free time, I decide to go for a hike. So these things we do every day. Every day we are doing something in the free time. But since we do not have any specific hobby, we are doing so many things that we call our interests. We are interested in such things. So if you don't have a hobby, you have to say that, sir, I don't have any specific hobby, but I have some interest like such and such, such and such. You can give 2 or 3 examples and they may ask you some question on that. बिल्कुल. अनुराग द्विवेदी जी का कमेंट लेंगे अब यहाँ पे. उनका पूछना ये है कि व्हाट इफ आई कांट आंसर मेनी ऑफ द क्वेश्चंस दे आस्क मी, विल दे फेल मी? It depends on the question they ask. Suppose they ask something about you, your father, your father's profession. Is it okay that if you say that I do not know anything about it? Now the question comes, some basic questions on your subject. Suppose you are a science student all through. I don't know what is your background. They ask you some basic science question. So basic science question is just like the alphabets in English. Can you say, sir, I do not know? Now, if they ask you some complicated question, if they ask you questions in banking and other things which you are not supposed to know as a student for preparing for these interviews, you can say, sir, I do not know anything about this. But again, if they ask you about demonetization may be an economic term, but every one of us know about demonetization because we are read it throughout for about more than a month. We are seeing it in the papers. Can we say that we do not know? So it depends on the question that is asked to you. There are certain questions which they ask to stress you. In those questions particularly, you can say that, sorry sir, I do not know anything about it. But there are certain questions like about yourself or about your subject or about what has popularly happened down these days. Now Mr. Trump is doing so many things, they can ask you about it. अब यही इसी से जुड़ा हुआ बिल्कुल. So can you say that I don't know? अगला क्वेश्चन इसी पे ही डिपेंडेंट हम लेंगे. यहाँ पे नितिन धनसोड़िया जी यहाँ यही पूछ रहे थे कि व्हाट आर द हॉट करंट अफेयर्स टॉपिक अकॉर्डिंग टू यू दे में आस्क. तो प्लीज सी द हेडलाइंस. और इसमें आपका यहाँ पे जो आपने ट्रम्प का नाम लिया, डोनाल्ड ट्रम्प द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, अभी जो हाल ही में जिनने अपना कार्यकाल शुरू किया है, डेफिनेटली उन पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. वो जो कर रहे हैं. हाँ, ही हैव अपॉइंटेड मेनी इंडियन ओरिजिन पर्सन्स इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट में. व्हाइट हाउस में 2 लोगों को बिल्कुल वहां पे उन्होंने निर्वाचित किया है एट द एडमिनिस्ट्रेशन पोजीशन. इसके अलावा कई डिपार्टमेंट्स में इंडियन ओरिजिन लोगों को वहां पे प्लेस मिला है. सो दिस कैन डेफिनेटली बी आस्क्ड इन द क्वेश्चन. कैन बी आस्क्ड, और व्हाटएवर ही इज डूइंग, द स्टेप्स दैट ही इज टेकिंग, like building the Mexico wall and all those things. Definitely. So इसके अलावा ask about all those things. बिल्कुल. तो यहाँ पे करंट अफेयर्स तो आपको बिल्कुल अपॉइंटमेंट्स, रेजिग्नेशंस, क्योंकि लास्ट अगर अभी हम सर बात करें तो सिंस दिसंबर वी आर सीइंग दिसंबर जनवरी मेनी अपॉइंटमेंट्स have taken places, many important many resignations, many retirements have taken places, replacements of the positions, लोगों की अदला बदली बिल्कुल प्लेसिंग की हुई है, including the first sick चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. सीजे की बात हम यहाँ वही कर रहे थे. चीफ जस्टिस का भी यहाँ पे बिल्कुल हुआ है. फर्स्ट 6 चीफ जस्टिस. बिल्कुल.
army They may not heads ask भी who is the Chief Justice of India. They may ask you who is the first Sikh Chief Justice of India. चीफ डेफिनेटली। इसके अलावा यहाँ पे आर्मी एडमिरल्स के, नेवी का, एयरफोर्स का, एवरीबडी, बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स हुए हैं यहाँ पे। एंड इसके अलावा स्पोर्ट्स में भी मेनी अवार्ड्स, मेनी कॉम्पिटिशंस, मेनी चैंपियनशिप्स हैव टेकन See, these प्लेसेस। national awards that have been given, Padma Awards in the Republic रिपब्लिक Day, डे। so many to who are the sportsmen who have been honored. They'll ask you who are the sportsmen who have been honored. डेफिनेटली। They'll ask you who are the persons of classical music who have been honored. बिल्कुल। तो यहाँ पे तो हम एक ही चीज कहेंगे, इफ यू आर बॉदर्ड अबाउट द करंट अफेयर्स, यू कैन गो थ्रू द दिसंबर एंड जनवरी करंट अफेयर्स वेरी थॉरोली, क्योंकि वहां से आपके बहुत सारे फैक्ट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड मैक्सिमम क्वेश्चंस वी कैन इमेजिन 90 to 95% कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दीज पार्ट्स ओनली। किसका कहाँ अपॉइंटमेंट हुआ, किसका कहाँ रिप्लेसमेंट हुआ, किसको कहाँ कहाँ And I पोजीशन think दिया that गया। the interviews for the probationary officers are going to start after the presentation of the budget by the Budget. union government, Most important, which yes। we'll be taking up separately. We'll be taking Budget up session, the definitely, we'll we'll be conduct taking up one the budget highlights session। of the budget session separately, for which you please watch our site, and you will be said that when we are going to Definitely, take it up. definitely, You please because watch that, because हाँ, in that we are going to talk about many terms that are used in the budget. because many this economic time terms railway and budget yeah, and union budget is coming together, yeah. तो They बिल्कुल no, the railway, it is not coming together. It has been merged. merged। The railway budget is now merged. It will be a part of the union budget. दैट मीन्स वन बजट वुड बी प्रेजेंटेड Yeah. इंक्लूडिंग एवरीथिंग। तो बिल्कुल क्वेश्चंस इस पे बनेंगे ही बनेंगे। सो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट। आगे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो वही सारे क्वेश्चंस है। कुछ कैंडिडेट्स का आज भी यहाँ पे कमेंट आया है कि अबाउट देयर रॉन्ग फिलिंग इन द एप्लीकेशन फॉर्म, कुछ डेटा उनने गलत फिल आउट कर दिया है। तो क्या कहा जाए इनसे? इसमें क्या कहा जाए, ये तो थोड़ा सा केयरलेसनेस थी आपके पार्ट में. आई होप दैट यू विल बी मोर केयरफुल इन फ्यूचर. एंड इफ इट इज नॉट रेलिवेंट, if it is not affecting your eligibility, except that your name should be correct, of course. If other things are there, you can explain it out that you, by mistake you did it, and maybe they ask you to make a correction in the form. अब यहाँ पे बिल्कुल सचिन सचदेव जी ने एक थोड़ा सा जेन्युइन यहाँ पे कमेंट किया हुआ है कि उनने कैनरा बैंक प्रेफर्ड लिस्ट में सबसे पहले भरा। क्यों? क्योंकि उस पे वैकेंसी ज्यादा थी। तो क्या ये ही आंसर वो वहां दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, मगर फिर कैनरा बैंक के बारे में थोड़ा सा वो पढ़ के भी जाए, ये हमारा सलाह है. ये तो दें, ठीक है, कैनरा बैंक का सबसे ज़्यादा वैकेंसी था इसीलिए हमने भरा है, कह सकते हैं, ओके, वैलिड. बट एट द सेम टाइम लेट him also study something about the basics of Canara Bank. Let him go to the site of Canara Bank. उनका कौन है CEO, कौन है चेयरमैन, and all those things. Let him see and go. बिल्कुल। और बहुत बेसिक सी चीजें पढ़नी है। टैगलाइन आपको पढ़नी है, सीईओ पढ़नी है, हेडक्वार्टर पढ़ना है, यही सारी चीजें बस आपको पढ़नी है, क्योंकि इतना बेसिक नॉलेज ही रिक्वायरमेंट होता है अगर हम इनिशियली बात करें तो। आगे विजय सांगवान जी यहाँ पे बिल्कुल फिर से कुछ वैसा ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिसको हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस आउट किया भी है कि बीएससी बैकग्राउंड के हैं तो किस तरीके के क्वेश्चंस वहां पे पूछे जा बेसिक सकते क्वेश्चंस ऑन साइंस. देखिए, बीएससी आपने किया है, मेरे ख्याल से 7वें या 8वें क्लास से आप साइंस पढ़ रहे हैं. तो अगर बेसिक क्वेश्चंस आपसे साइंस से पूछेंगे, जैसा व्हाई इज द स्काई ब्लू और सर्टेन, और या जीके क्वेश्चन पूछेंगे, विच आर द 3 elements that have been added to the periodic table recently, या नोबेल प्राइज पे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, यू शुड बी एबल टू आंसर. बिल्कुल। यहाँ पे अब राजीव द्विवेदी जी का एक क्वेश्चन बहुत देर से आ रहा है, व्हाई आरबीआई हैड इट्स रीजनल ऑफिस इन कानपुर? Had it was there from a long time. Even I think it was one of the original regional offices that was in Kanpur. And ही इज आस्किंग द सेम क्वेश्चन। लैंग्वेज थोड़ा सा उनका प्रॉब्लमेटिक है वहां पे पूछने का। वो ये पूछना चाह रहे कानपुर में क्यों है? क्योंकि कानपुर was a more important business center than Lucknow, from industrial and business center. The business is more concentrated in Kanpur than at Lucknow. And moreover, initially there was that stock exchange, everything was in Kanpur. So it was probably thought wise that it should be in Kanpur. That was even before Lucknow became the capital, all that was there. And I think it was a more commercially important city, and therefore they had it at Kanpur. बिल्कुल। That is my interpretation of the whole thing.
I don't know about the history. बिल्कुल। स्नेह शांडिलिया जी का यहाँ पे पूछना ये है कि डू वी नीड टू नो बैंकिंग इन डेप्थ? No, unless and until you are a MBA finance and all those things, where you are supposed to have studied detailed banking. अब श्रुति शर्मा जी अगेन यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल मैटर है, कहीं ना कहीं फिर वही हमारे पर्सनल डेमोक्रेसी रिलेटेड या क्वेश्चन उस तरीके का आया है कि व्हाट टू आंसर इफ दे आस्क विच पॉलिटिकल पार्टी डू यू सपोर्ट फॉर द अपकमिंग इलेक्शंस? Again, last time also I probably gave the answer. Tell them, sir, adult franchise is a secret ballot in India, and I prefer that I keep my preference secret. डेफिनेटली, सो यू कैन हैंडल इट वेरी केयरफुली, आराम से इसको हंसते हुए। बिल्कुल। तो यहाँ पे अब अगर हम बात करें, नवीश गुप्ता जी का वही क्वेश्चन है, उनका इंटरव्यू जो है वो 2 फरवरी की मॉर्निंग में है, तो बजट रिलेटेड क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं? बजट रिलेटेड क्वेश्चन तो जो भी बजट में आएगा उस पर डिपेंड करेगा। मतलब पूछे जा सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा देख ले बजटरी हाँ, टर्म्स आप वहां पे उसको बिल्कुल हैंडल इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि जो बजट आएगा उसको एक बार आप देख लीजिए, समझ लीजिए, जो डिस्कशंस आएंगी न्यू और उसमें भी आपके टीवी में भी डिस्कशंस आएंगे, उसको एक बार जस्ट हियर देम। बिल्कुल, और हाइलाइट्स उसके देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उनके देख सकते हैं जिनको आप ध्यान रख सकते हैं, बिकॉज वी ऑल्सो नो कि 1 फरवरी हार्डली मेक एनी डिफरेंस, तो वहां पे कुछ आपको स्मार्टली आंसर करना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे बिल्कुल। तो यहाँ अगर हम बात करें आगे, तो इसी तरीके से बस यही क्वेश्चंस आ रहे हैं आज तो कैंडिडेट्स के, कुछ यही बिल्कुल। गुरतेज सिंह लुधियाना जी शुरू में भी पूछ रहे थे, अब दोबारा फिर पूछ रहे हैं कि ही इज फ्रॉम पंजाब, व्हाट कैन आई आंसर इफ दे आस्क हुम डू यू वोट? तो सेम आंसर इनको भी यहाँ पे होता है कि सीक्रेट बैलेट होता है, तो अपनी मुस्कुराते हुए हंसते हुए इसको आप कह दीजिए कि सर इट इज सीक्रेट बैलेट एंड आई प्रेफर टू कीप इट सीक्रेट। बिल्कुल। अब यहाँ पे बिल्कुल सेशन को अगर हम आगे बढ़ाएं तो सर से बिल्कुल हम पूछेंगे कि सर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, अगले सेशन में मिलेंगे कैंडिडेट से फिर से उनके क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए। तो इन द लास्ट नाउ टुडे व्हाट यू हैव टू गिव टू द कैंडिडेट सो दैट दे कैन फील मोर कॉन्फिडेंट, अब वो सारी तैयारियां बिल्कुल बहुत अच्छे से करें अपकमिंग इवेंट्स को। एवरी टाइम यू आर फीलिंग नर्वस, व्हाट हैपेंस? देयर इज अ perspiration, a drop of perspiration that is coming up. Every time when you are not able to answer a question in the interview, what happens? You feel heated inside, some perspiration again comes, nervousness. So nervousness is a sort of a fear that has been produced by your body. And this body, when it produces this heat or energy, this is producing a energy, a negative energy is produced in the body. And we all know that there is a law of conservation of energy, which says that energy cannot be created or destroyed. Definitely. So if I tell you to destroy this nervousness or to destroy this fear, then I am going against the law of conservation of energy. But what we have to do is that we have to, by following what we are saying, by doing some meditation, as I told you last time, by getting basic knowledge about my subject and my environment and all those things, what we are doing, we are trying to convert this energy of fear into energy of confidence. This conversion should be there in your body, and this conversion has to come from within you. And how do you come from within you? By being more happy, taking this interview as an utsav. I have always told you that this interview should be treated as a utsav, as a celebration. As a celebration of what? As a celebration of having qualified the written test. बिल्कुल। Lakhs appeared for the written test. Only a few thousands have qualified. Does it not call for a celebration? And where do we celebrate? We celebrate in the interview. It is the interview where you should go and treat it as a celebration, as a utsav. Be happy, go happy, have a happy dinner. Let the happiness come from within you. Have a confident face, have a confident feeling in yourself. Develop these things. Look at yourself in the mirror every day, and every day you should find a positive change towards a more happy face. This is what I'll advise you.
right now, Definitely. and again we meet again on Thursday. Thursday, बिल्कुल. हाँ? We'll meet again on Thursday at 1 p.m. sharp in this interview facts पे बात करने के लिए और देखने के लिए और भी जानने के लिए. तब तक के लिए बिल्कुल पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना और प्रिपेयर करते रहिए. फील कॉन्फिडेंट फ्रॉम इनसाइड बिकॉज दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. ऊपर से कॉन्फिडेंस आपका Happy, तब तक. feel हाँ, happy and confident. फील कॉन्फिडेंस एंड हैप्पी. बिल्कुल आपको किसी भी चीज की बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिकॉज यू हैव क्वालिफाइड among lakhs of And this students. is going to be an utsav. It is going to be a celebration, no task. It's not a task. This is not a task. Definitely it's we can say the starting of your career. You are moving ahead, so feel happy, feel confident, keep studying, and do not forget your successes are success. Thank you so much.